Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay and you're watching Physics Corner. So in this video we are going to discuss the unit number 5, that is fiber optics and laser. Hello friends, welcome back to my channel. I am Akshay and you're watching Physics Corner. So from this video we are going to discuss the new unit, that is fiber optics and laser. And in this video we are going to discuss the important concept, that is nothing but total internal reflection. What? Total internal reflection. तो आप देख सकते हैं this diagram is for total internal reflection phenomena. तो देखिए ये वाटर मीडियम विच इज डेंसर एज कंपेयर टू दिस एयर मीडियम. तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जो भी रे जाएगा, अब देखिए ये है यहाँ पे सोर्स है, तो जो भी सोर्स रहेगा वो डेंसर मीडियम में रहेगा. ओके, जो भी सोर्स रहेगा वो डेंसर मीडियम में रहेगा, यानी कि सोर्स डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. तो देखिए अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखिए फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ सी व्हिच मेक्स द एंगल लेस देन 90 डिग्री. अब ये जो एंगल है थीटा 2 व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री. अब देखिए फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is parallel to the surface, is parallel to the surface. That means it makes an angle which is equals to the 90 degree, and for which the angle of incidence, the angle of refraction makes a 90 degree angle. For that incident angle we call it as critical angle. critical angle यानी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल. अब देखिए इस दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड फॉर दैट टोटल रिफ्लेक्शन ऑकर्स. यानी कि अब ये जो सोर्स था, ये सोर्स यहाँ पे सरफेस पर क्या हुआ, टारगेट पे क्लिक हुआ, फिर उसके बाद वो उसी मीडियम में वापस आए, उसी मीडियम में वापस आए. दिस फिनोमेना इज नथिंग बट व्हाट, total internal reflection. Okay, when the angle of incidence of a ray of light traveling in a denser medium, okay, which is denser medium is greater than the critical angle. Okay, जो भी angle of incidence रहेगा वो क्या रहेगा, greater than the critical angle. Then there is a no refraction. Okay, for this angle there is a no refraction of a light into the rarer medium, and the ray is reflected into the denser medium, okay, into the same medium, and this phenomena is nothing but what, total internal reflection. Or there are two conditions for the total internal reflection. First condition है the incident light must pass from a denser medium, यानी कि जो भी इंसिडेंट लाइन रहेगा वो डेंसर मीडियम से पास होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये जो एंगल रहेगा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर रहना चाहिए, तभी तो वो सेम मीडियम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. तो सिंपल फिनोमेना था. ओके, तो ये देखिए अमरावती यूनिवर्सिटी में विंटर 13 को 5 मार्क्स के लिए पूछा था, उसके बाद विंटर 16 को और विंटर 18 को 3 मार्क्स के लिए पूछा था. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.